गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया इज़ मोस्ट अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने चाइना को मॉर्गन स्टैनली की जो इमर्जिंग मार्केट्स का मार्केट इंडेक्स है उसमें पहली बार जो है ओवरटेक कर लिया है और लार्जेस्ट कंट्री बाय वेट जो है वो इंडिया बन गई है। लेकिन चाइना स्टिल अभी भी एमएससीआई का जो इमर्जिंग मार्केट स्टैंडर्ड इंडेक्स है उसको अभी भी लीड कर रहा है। तो जो ये इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स है ये लार्ज मिड और स्मॉल कैप रिप्रेजेंटेशन को जो है वो कैप्चर करता है। तो हुआ क्या है कि इंडिया जो है फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी से अब वो जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है वर्ल्ड की। और फोकस जो है गवर्नमेंट ने किया है डेवलपमेंट पर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, एंटी करप्शन इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। इंडिया की स्टॉक मार्केट भी पिछले 3 साल में 46% सर्ज की है। उसकी वजह से जो है वो ग्लोबल अटेंशन देखने को मिला है। अब इंडिया में ये इंडियन मार्केट क्यों इतना जो है वो आगे बढ़ रही है। तो लेबर रिफॉर्म्स अगर हम देखें तो ओवर 48 मिलियन जो मीडियम स्किल्ड वर्कर्स हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो चाइना में रिटायर हो जाएंगे। जबकि इंडिया में तो 38 मिलियन सच वर्कर्स ऐड होने वाले हैं। इंडिया में गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बहुत फोकस दे रही है। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स जो कि डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं सप्लाई चेन्स को, उनको जो है ये चीज़ अच्छी लग रही है। ठीक है। फिर गवर्नमेंट का फोकस जो है वो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ पर है, इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। इंडिया का रिन्यूड फोकस है डेफिसिट को कम करने पर, जैसे कि हम बजट्स में देख रहे हैं। ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो है वो ग्लोबल इंडेक्सेस में जो है वो वेट बढ़ रहा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। तो उससे जो है पॉलिसी पैरालिसिस जो अर्स्टवाइल यूपीए गवर्नमेंट में था वो भी ख़त्म हुआ है। ठीक है। तो इंडिया ने जो है वो इंडिया बेसिकली बेनिफिट कर रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स से, जो कि चाइना की तरफ नेगेटिव हो रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं, खासकर एजुकेशन और स्किल गैप है वर्कर्स में। ओवर 40% इंडियन के वर्कर्स जो हैं वो अभी भी प्राइमरी इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं, जबकि जो चाइना में है वो इसका हाफ है। अर्बनाइजेशन को भी तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है, रेड टेप कम करने की ज़रूरत है, इन्फ्लेशन को डील करने की ज़रूरत है जो कि एक शॉर्ट टर्म रिस्क है। फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, रशिया यूक्रेन वॉर है, या फिर मिडल ईस्ट में जो इंस्टेबिलिटी चल रही है उससे ट्रेड डिसरप्शन या माइग्रेशन के इश्यूज आ रहे हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग से हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, बायोडाइवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खतरा है। तो अगर हम देखें, एनालिसिस करें जो ये रिपोर्ट आई है अभी, तो इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है एमएसएमई IMI इंडेक्स में। और इंडिया में जो है जो ग्लोबल फंड्स हैं वो इंडिया एक्सचेंज ट्रेड फंड्स को जो है वो परचेज कर रहे हैं, या फिर डायरेक्टली खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन स्टॉक्स में। तो इंडिया के जो इंडेक्स की वेट है वो स्ट्रॉन्गर फंडामेंटल्स को शो कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कोलिजियम सिस्टम ऑफ जुडिशरी। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक रूल किया है रिसेंटली कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं उनके पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो इंडिविजुअल ही किसी भी जज की एलिवेशन को रिकमेंड कर दें। ठीक है। तो आर्टिकल 217 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट और कंडीशंस क्या होंगी। ये कहता है कि हर जज ऑफ हाई कोर्ट जो है प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड होगा, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है। और इस केस में अपॉइंटमेंट अगर हो रही है जज की अदर दैन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी कंसल्ट किया जाएगा। अब यहीं पर ये सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया है कि जो ये कंसल्टेशन होगी, ऐसा नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपना नाम कुछ रखेंगे, उनको भी अपने कोलिजियम सिस्टम से जो है वो नाम रिकमेंड करवाने होंगे। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या होती है जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए? 10 ईयर्स का कम से कम जुडिशल ऑफिस होना चाहिए किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं पर भी। 10 ईयर्स का एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में किसी भी स्टेट के। और लगभग 62 और जो है वो 62 ईयर्स ओल्ड जो है वो उन तक वो ऑफिस जो है वो होल्ड कर सकते हैं। अब कोलिजियम सिस्टम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस का होता है वो नाम रिकमेंड करता है अपॉइंटमेंट फॉर जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। ठीक है। अब चीफ जस्टिस जो है उनको भी अपने 2 सीनियर मोस्ट जो है जज को कंसल्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही वो जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए एलिवेशन के लिए नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है।
तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस जो है उनको स्टेटस ऑफ कंसल्टेंट जो है वो बनाया गया है, और जो अपॉइंटमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव पर छोड़ा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो लेकिन जो है कोलिजियम सिस्टम ने इसके ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी दी है। जैसे फर्स्ट जजेस केस में तो कहा गया था कि जो कंसल्टेशन होती है चीफ जस्टिस के साथ करनी वो कोई ज़रूरी नहीं है, उसका मतलब कंकरेंस नहीं है। लेकिन सेकंड जजेस केस में कहा नहीं, कंकरेंस ज़रूरी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग होगी, ठीक है। थर्ड जजिस केस में कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिविजुअल फैसला नहीं लेते हैं, वो जो है अपने 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करते हैं, उसके बाद ही फैसला लेते हैं, ठीक है। और ओपिनियन जो है मेंबर्स का वो कोलिजियम में राइटिंग में होना चाहिए। तो अभी यही हुआ था कि जो है हिमाचल प्रदेश के जो है हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने इंडिविजुअली कोलिजियम को रिकमेंड कर दिए थे कुछ नाम, जिसके केस जिसमें जो है वो फिर ये केस हुआ था, और इसमें जो है अब ये क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो कोई सिंगल इंडिविजुअल जो है इसका ये प्रेरोगेटिव नहीं होता जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ये कोलैबोरेटिव और पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है। जो प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट जो जजेस की जो है वो कलेक्टिव विजडम दिखानी चाहिए, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स उसमें होने चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि लिमिटेड जुडिशियल स्क्रूटनी जो कोलिजियम सिस्टम की है वो परमिसिबल होगी, ठीक है। बेंच ने यह भी कहा कि अगर लैक ऑफ इफेक्टिव कंसल्टेशन या फिर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है तो वो जुडिशियल रिव्यू में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो कंजर्वेशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस इंडिया वो जो है उन्होंने कहा है कि जो इलीगल रेलोकेशन ऑफ विलेजेस फ्रॉम टाइगर रिजर्व्स के ऊपर जो NTCA ने जो है ऑर्डर निकाला है उसको विड्रॉ किया जाना चाहिए। तो हुआ कि अभी जून 2024 में 89,000 प्लस फैमिलीज़ को 848 विलेजेस में से आइडेंटिफाई करके NTCA ने कहा कि स्टेट्स इनको रिलोकेट करें, कोर एरियाज ऑफ टाइगर रिजर्व से निकाल कर कहीं और इनको रिलोकेट करें। तो ये डायरेक्टिव जो है 19 स्टेट्स को जो है ये दिया गया, और कहा गया कि इन विलेजेस की कोर टाइगर जोन्स में से रेलोकेशन की जाए। तो अब टाइगर रिजर्व आपको पता है कि उसमें एक कोर एरिया होता है जिसको हम क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कहते हैं, जिसको मैनेज किया जाता है इज एज इनवॉयलेट एरिया, यहाँ पर कुछ भी अलाउड नहीं होता है। फिर होता है बफर या फिर पेरिफेरल एरिया, जिसमें कुछ लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होती है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें रेगुलेटेड रिस्ट्रिक्शंस के साथ अलाउड होती हैं। कोर जोन्स में तो जो है कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जैसे हंटिंग, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन, ये सब प्रोहिबिटेड रहती हैं। लेकिन एक्टिविस्ट का ये कहना है रेजिडेंट्स जो हैं ये जिनको निकाला जा रहा है ये मोस्टली आदिवासी हैं या फिर फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं, ये एंटाइटल्ड हैं रहने के लिए, फॉरेस्ट प्रोड्यूस अपनी लेने के लिए फॉर देयर लाइवलीहुड अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ठीक है। और अगर 19 टाइगर स्टेट से इसमें ये डिस्प्लेसमेंट की जाती है तो ये आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। इसकी वजह से जो है स्टेट अथॉरिटीज़ और ये ST कम्युनिटीज़ के बीच में जो है वो एक कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि इससे जो है ये कम्युनिटीज़ अदर टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ को भी एक्सपोज हो सकती हैं। तो NTCA क्या है? NTCA जो है वो 2006 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मिनिस्टर इन चार्ज जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो इसके मेंबर्स होते हैं। स्टेचुटरी अथॉरिटी देना प्रोजेक्ट टाइगर को वो इसका काम है। अकाउंटेबिलिटी रखना सेंटर और स्टेट की मैनेजमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व्स में, ओवरसाइट करवाना पार्लियामेंट की, लाइवलीहुड इंटरेस्ट जो लोकल पीपल के वो अश्योर करना, ठीक है। और टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है उसको अप्रूवल देना, ये सब NTCA का काम है। नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स भी बनाना टूरिज्म एक्टिविटीज़ या फिर प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड गाइडलाइंस इशू करना, ये सब NTCA करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया GCC फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो सऊदी अरेबिया के कैपिटल में जो है वो अराइव किए हैं, और उन्होंने अपनी फर्स्ट इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है? एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है 6 कंट्रीज़ का, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया और UAE का, जो कि 1981 में बनाया गया था ताकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कल्चरल और सोशल कोऑपरेशन बिटवीन 6 स्टेट्स जो है वो प्रमोट किया जा सके। हर साल ये समिट करते हैं ताकि कोऑपरेशन और रीजनल अफेयर्स को डिस्कस किया जा सके। और इंडिया और GCC के कैसे रिलेशन है? तो इंडिया जो है गल्फ़ को अपना इमीडिएट नेबरहुड जो है वो कंसिडर करता है, सिर्फ अरेबियन सी से ही तो हम सेपरेटेड हैं। और GCC एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। GCC कंट्रीज़ पर्शियन गल्फ़ की जो है
के पास बिल्कुल लोकेटेड हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सी लेन है ग्लोबल ट्रेड का। तो इंडिया और जीसीसी ऑलरेडी एमओयू साइन कर चुके हैं मैकेनिज्म्स ऑफ कंसल्टेशंस का सितंबर 2022 के अंदर। उसी के अंदर ही जो है ये एनुअल डायलॉग बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जो जीसीसी ट्रॉयका के बीच में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो करंटली रीजन जो है वो एक्सपैंड कर रहा है अपने आप को बियॉन्ड एनर्जी सेक्टर इनटू अदर फील्ड्स जैसे कि टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, और इसके लिए इसकी वजह से जो है इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो निकलती हैं। इंडिया और जीसीसी का बायलैटरल ट्रेड 161 बिलियन से भी ज़्यादा का है, ठीक है। और इंडिया का और जीसीसी का जो एफटीए है वो भी अभी नेगोशिएशन में है, क्योंकि हम ऑलरेडी यूएई के साथ कर चुके हैं, तो इससे जो है कुछ रिन्यूड मोमेंटम हमको जीसीसी के साथ करने को भी मिल रहा है। जीसीसी कंट्रीज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व्स को पोजेस करती हैं। 35% इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स और 70% ऑफ गैस इंपोर्ट्स जो जीसीसी से ही आते हैं। लेटेस्ट फिगर्स के हिसाब से 8.9 मिलियन इंडियन एक्सपर्ट्स जो है वो जीसीसी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 66% ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया ईयू बायलैटरल रिलेशनशिप। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स जो डिफेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हैं वो यूरोप में गए हैं 3 डे स्टडी विजिट के लिए। तो इंडिया और ईयू के डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1962 में फॉर्मली बने। 2004 में इंडिया और ईयू का स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन हुआ। ईयू इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसका मतलब है कि लगभग 11% जो इंडिया का टोटल ट्रेड है वो ईयू से के साथ ही होता है। सेम ईयर में ही बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया और जो है ईयू का वो $115 बिलियन पहुंच चुका है। ईयू कंपनीज जो है वो $87 बिलियन की क्यूमुलेटिव एफडीआई जो है वो कर चुकी हैं पिछले 22 सालों में। और स्ट्रेटजिक कॉपरेशन भी कर रहे हैं हम। बोथ रीजन्स जो है वो कमिटेड हैं पेरिस एग्रीमेंट पे, और वो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस पे जो है वो काम कर रहे हैं। फिर इंक्रीजिंगली हमारे इंटरेस्ट अलाइन हो रहे हैं डिफेंस कॉपरेशन पर, पर्टिकुलरली मैरीटाइम सिक्योरिटी में, इंडो पैसिफिक रीजन में। डिजिटलाइजेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पर भी जो है हमने कोलैबोरेट कर रहे हैं, खासकर एआई पर भी। फिर ईयू का जो जीडीपीआर है वो बेंचमार्क्स फॉर प्रिवेसी और डेटा प्रोटेक्शन हमें दे रहा है, जिसकी वजह से इंडिया भी जो है वो अपने डेटा प्रोटेक्शन लॉज को अपडेट कर रहा है। फिर एक कॉमन विजन भी है हमारा रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या हैं? ऑनगोइंग एफटीए नेगोशिएशन जो 2007 से चल रही हैं वो अभी तक कंक्लूड नहीं हुई हैं, ठीक है। ईयू की ब्यूरोक्रेसी थोड़ी स्लो है इस मामले में। इंडिया के कंसर्न्स हैं अबाउट स्ट्रिंजेंट ईयू स्टैंडर्ड्स जो कि डेटा प्रोटेक्शन पर हैं, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस पर हैं, लेबर लॉज पर हैं, ठीक है। ईयू का जो स्टैंस है यूक्रेन पर वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से अलाइंड नहीं है। ईयू का एम्फेसिस जो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर होता है उससे जो है कई बार टेंशन हो जाती है, क्योंकि इंडिया उसे कंसिडर करता है एज इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्लोअर ग्रोथ इन बैंकिंग सेक्टर। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेटेस्ट डेटा के मुताबिक आरबीआई के बैंकिंग सेक्टर में जो है स्लो ग्रोथ देखने को मिल रहा है डिपॉजिट्स में एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट, जो कि पिछले पास्ट फ्यू मंथ्स से हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ये गैप बढ़ता जा रहा है डिपॉजिट्स के बीच में और क्रेडिट के बीच में, और इसकी वजह से जो है असेट लाइबिलिटी मिसमैच हो सकता है लेंडर्स के लिए, ठीक है। तो बैंक डिपॉजिट्स जो है वो 11.7% पर रहे जून 2024 में जो क्वार्टर एंड हुआ, जबकि बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 15% पर रहा। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, किस वजह से ये देखने को मिल रहा है हमें? क्योंकि जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं वो बैंक्स की बजाय वो कैपिटल मार्केट्स में जा रही हैं। इंडियंस जो हैं वो धीरे धीरे कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अपनी वो फंड्स जो कि अदरवाइज़ वो बैंकिंग सेक्टर में पार्क रखते थे। तो चाहे वो डायरेक्ट ट्रेडिंग करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें, बट ट्रेडिंग ज़्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा उसमें कर रहे हैं, बैंक्स में डिपॉजिट्स कम रख रहे हैं। एक राइज देखने को मिला रिटेल पार्टिसिपेशन में, खासकर इनडायरेक्ट चैनल से जैसे कि म्यूचुअल फंड से, इंश्योरेंस फंड से या पेंशन फंड से। बैंक्स जो है वो इंक्रीजिंगली अब उनको अपनी जो डिपॉजिट ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है वो उनको महंगे जो है टेक्निक्स जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से जो है वो लेनी पड़ रही है, जिसकी वजह से जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट आने वाला है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इश्यूज जो है वो बैंक्स को में आ सकते हैं अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो डिपॉजिट टाइटनेस जो है वो अभी भी रहने वाली कहा जा रहा है, जबकि बैंक्स जो हैं वो अलग अलग स्कीम्स निकाल रहे हैं डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। पर जो है एक डेलिकेट बैलेंस बनाकर रखना रोबस्ट लोन ग्रोथ में और चार्जिंग हाई और इंटरेस्ट रेट्स फॉर डिपॉजिट्स में, ये जो है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हुआ क्या था कि अभी एफडी के इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए थे बैंक्स ने, तो लोगों ने अपना पैसा जो है वो कैपिटल मार्केट्स में पार्क करना शुरू कर दिया था, डिपॉजिट्स में जो है वो इसलिए डिक्लाइन देखने को मिल रहा है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अग्नि 4 मिसाइल। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है टेस्ट फायर ऑफ अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, जो कि इंडिया की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, उन्होंने ये जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया है। ये जो है 4000 किलोमीटर्स की रेंज का है। पेलोड ये 1000 किलो तक का लेकर जा सकता है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल सिस्टम का यूज़ करता है। डीआरडीओ ने इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है। तो स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड क्या है? इसको हम स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर कमांड भी कहते हैं। इंडिया के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है ये, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कमांड और कंट्रोल डिसीजन से के लिए रिगार्डिंग इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। और ये रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रीज टैक्टिकल और स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल के लिए। ठीक है, 2003 में इसको क्रिएट किया गया था। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is India's most attractive emerging market. This topic is important for your economy section. So India has overtaken China in the MSCI Emerging Markets Investable Market Index for the first time, becoming the largest country by weight. But China still leads the MSCI Emerging Market Standard Index. So what this IMI basically captures the large, mid, and small cap segment across the emerging market countries. So, why India has remained the favorite emerging market for investors? Over the last decades, over the last 1 decade, India emerged from being a fragile five economy to become the fifth largest economy of the world, and it has been driven by the continuous focus on development, a range of structural reforms, and anti-corruption initiatives. India's stock market has surged by 46% over the past 3 years, and this has drawn global attention. So, according to Bloomberg, but there are certain drivers of growth in the Indian market. For example, the Indian labor force is presenting exciting prospects for manufacturing growth. For example, over 48 million medium skilled workers which are in the manufacturing sector in China could retire from it. On the other hand, India could rather add over 38 million such workers. With respect to capital, we are seeing a surge of infrastructure projects, and $1.7 trillion is expected to be invested in infrastructure by 2030. So this is mainly attracting the global manufacturers who are seeking to diversify supply chains. So government is also focusing on high economic growth and increased spending on infrastructure, and this is also bringing India into the spotlight. India is also Indian government actually is having a renewed focus on bringing down the deficits, as evident from the budget statements, and country's strong economic fundamentals are making it an attractive destination for long-term investors. Political stability has also played a major role in India's growth and enhancing investor confidence. India is also benefiting from global investors turning negative towards China. Okay, but there are certain challenges still. So, for example, education and skill training gap is there. Over 40% of India's workers are still employed in primary industry, which is more than double of the share in China. Urbanization also needs improvement to rehouse rural workers more efficiently. Cutting red tape and offering incentives for manufacturing have attracted business investment and should continue to drive growth. There has been increasing inflationary pressures, which present a short-term risk. Russia-Ukraine war and instability in the India in the Middle East has also created various challenges like trade disruption, migration, etc. And global warming is also posing a significant risk to agricultural productivity, biodiversity, and infrastructure, with its implications for investments in India. So, a rising weight in the MSCI EM index an is an important development, and India global funds are not just tracking the Indian stock market, but they are instead investing in it also, if not just by direct investment, then through the Indian exchange traded funds. So increase in India's index weight is likely being reflected through the stronger fundamentals of Indian economy. Okay.
So the next topic is collegium system of the judiciary. This topic is important for your polity section. So the Supreme Court has ruled that a Chief Justice of a High Court does not have the authority to individually reconsider recommendations for a judge's elevation. So we all know the procedure to appoint the judges of high courts are ruled by the Article 217 of Indian Constitution, and it says that every judge of a high court shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal after consultation with the Chief Justice of India, the governor of the state as well. So in case of the appointment of a judge other than the Chief Justice of the high court shall be consulted. And eligibility criteria of a judge is that he or she has to be has for at least 10 years of judicial office experience in territory of India, 10 years advocate experience of a high court in any state, and uh, a high court judge holds office until they are 62 years old. But the collegium system that comprises of CJI and two senior most judges recommend the names for the appointment of judges of high courts. But this process is initiated by the Chief Justice of High Court after consulting two senior most judges of the High Court. Okay, so this is the clarification by the Chief Justice by the Supreme Court recently, and the constitutional provision has given the CJI and other judges the status of consultant, and the decision has been left to the executive only. Okay, so over time, the collegium system evolution has emerged, and it has been clarified through the first judge's case that the consultation of the Chief Justice does not mean concurrence, but in the second judge's cases, it was said that consultation means concurrence. But in the third judge's case, it was elaborated that the primacy to the opinion of CJI in the matter of appointment of judges should be there, but Chief Justice must consult four senior most judges of the Supreme Court while doing so. Okay, so recently the High Court of Himachal Pradesh Chief Justice had individually addressed the SC Collegium about the appointment of two or elevation of two judges to the High Court. So this was a case regarding this particular issue, and Supreme Court has said that this collegium system or appointment of appointment or judicial appointments is not the prerogative of a single individual. It is a collaborative and participatory process. So the process of appointment of judges must reflect the collective wisdom that draws from diverse perspectives. Through this judgment, the apex court has held that limited judicial scrutiny of collegium decisions is permissible. Okay, the bench also summed up the following legal principles: that lack of effective consultation eligibility falls within the scope of judicial review, and the suitability is non-justiciable, and therefore the content of consultation should not be part of the scope of judicial review. Okay. So the next topic is National Tiger Conservation Authority. This topic is important for your environment section. So conservationist organizations across India have called for the withdrawal of what they are terming as illegal relocation of villages from the tiger reserves ordered by the NTCA in June 2024. So what happened is that in June 2024, NTCA identified 89,000 plus families from 848 villages for relocation, and they directed the state authorities to prioritize relocating residents from the core areas of tiger reserves, emphasizing time-bound action plans for this process. So NTCA gave this direction to almost 19 states, urging them to prioritize the relocation of villages from core tiger zones. So we all know that core or critical tiger habitat is managed as an inviolate area, and a buffer or peripheral area is accorded a lesser degree of protection. So core zones in tiger reserves are designated areas where human activities like hunting and forest produce collection are prohibited, but in buffer zones they are regulated. Okay, so activists are claiming that residents mostly belonging to the Adivasi and other forest dwelling communities, they are entitled to live and use the forest produce for their livelihood as enshrined in the Forest Rights Act of 2006. So they have stated that the displacement from 19 tiger states could be the largest such exercise ever conducted across the world. So they have warned that such a move would result in conflicts between state authorities and the scheduled tribes and other traditional forest dwellers. This step will also expose these communities to vulnerabilities like economic and social insecurities, destitution, and disruption of their eco-cultural fabric. So what is NTCA?
It was constituted in 2006 under the provisions of Wildlife Protection Act of 1972. The minister in charge of Ministry of Environment is the chairperson. The Minister of State in Ministry of Environment is the vice chairperson. Then there are 3 members of parliament and the secretary of this ministry as the members of this organization. Okay, so the objective of NTCA is to provide statutory authority to Project Tiger so that compliance of its directives become legal. Then it also fosters accountability of center state in management of tiger reserves. It also provides for an oversight by parliament. It also addresses the livelihood interests of local people in areas surrounding the tiger reserves. It approves the tiger conservation plan prepared by the state government. It also lays down the normative standards for tourism activities and guidelines for Project Tiger from time to time for tiger conservation in the buffer and core area. Okay. So the next topic is India GCC Foreign Ministers meeting. This topic is important for your international relations. So External Affairs Minister has arrived in Saudi Arabia's capital to attend the first India Gulf Cooperation Council Foreign Ministers meeting. So Gulf Cooperation Council is a political and economic alliance of 6 countries in the Arabian Peninsula: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and UAE. And it was established in 1981 to promote economic security, cultural and social cooperation. So the Gulf constitutes the immediate neighborhood of India, separated only by the Arabian Sea. So it has emerged as a major trading partner for India as well. It sits across the Persian Gulf, which is an important sea lane for global trade. The India and GCC signed an MOU on the mechanisms of consultation in September 2022, and according to that, there is this annual dialogue is being held between AAM and the GCC Troika. Okay, so currently this region is expanding beyond the energy sector into other fields as well, like the tourism sector, construction and finance. So during the financial year 2023-24, India GCC bilateral trade stood at about $161.59 billion. So India and GCC is also negotiating an FTA, which may benefit from some renewed momentum following the India-UAE FTA. GCC countries possess almost half of the world's oil reserves, and 35% of India's oil imports and 70% of gas imports are met by GCC only. So according to latest figures, 8.9 million Indian expats are residing in GCC countries, which is approximately 66% of non-resident Indians. Okay. So the next topic is India-EU bilateral relationship. This topic is important for your international relations. So a group of officials from the Defense Ministry and Ministry of External Affairs are in Europe on a 3-day study visit facilitated by the EU delegation in India. So India and EU formally established their diplomatic relations in 1962, and in 2004, India-EU strategic partnership was signed. EU is India's third largest trading partner, accounting for about 11% of India's total trade in 2022. In the same year, bilateral trade in goods between India and EU reached over 115 billion euros. So EU companies are some of the largest investors in India, accounting for almost 87 billion euros in cumulative FDI between 2000 and 2022. So we are also cooperating in climate change and clean energy, because both regions are committed to Paris Agreement and they are working on clean energy transitions. In respect of security and defense, both sides are increasingly aligning their interest in defense cooperation, particularly in maritime security of the Indo-Pacific region. So with respect to digital and technological cooperation, we are also collaborating on digitalization and emerging technologies. So EU's General Data Protection Regulation has also set benchmarks for privacy and data protection, which India has also undertaken in its own data protection laws. India and EU both share a common vision for a rules-based international order, but there are certain issues as well. For example, the ongoing free trade agreement negotiations, which started in 2007 with between India and EU, have yet to reach a conclusion. India has concerns about stringent EU standards on data protection, environmental regulations and labor laws. EU has a very different policy on Ukraine crisis, which is not always aligning with India's foreign policy. EU has emphasis on human rights and democratic values, which sometimes lead to tensions because India views such concerns as interference in India's internal affairs. Okay.
So the next topic is slower growth in the banking sector. This topic is important for your economy section. So according to the latest data from RBI, banking sector has been struggling with slower growth in deposits compared to credit over the past few months. So the gap between deposits and credit is increasing, and it is creating an asset liability mismatch for lenders. So in the quarter that ended in June 2024, bank deposits stood at 11.7%, while the bank credit growth stood at 15%, which points to a higher credit deposit gap. Why it is happening? The major reason is the outflow of household savings from banks to capital markets. Instead of parking the funds into the bank deposits, a majority of Indians are moving towards the capital market investments through direct trading of stock or indirect trading through the mutual fund route. Okay, so a rise in retail participation was more substantial through the indirect channels, through the mutual funds, that is the mutual funds, insurance funds, and pension funds. So what had happened is that in the last few years, the bank deposits became less attractive for the consumers, and instead that's why the people started parking their savings into the capital markets for earning more returns. So that's why banks are now being forced to rely on more expensive funding sources like the certificates of deposits, which could now impact their profitability. So this development also exposes them to the structural liquidity issues. Okay, so banks have been giving attractive alternatives or attractive offers to the consumers so that they can park their funds into the deposits, but the deposit tightness is likely to persist despite banks efforts to strengthen their liability franchising. So the banking industry is in India is currently working hard to strike a delicate balance between continuing the robust loan growth and charging higher interest rates for deposits. Okay. So the next topic is Agni 4 missile. This topic is important for your security section. So recently India has completed a successful test fire of Agni 4 ballistic missile, which is an intermediate range ballistic missile. So this test was conducted by the Strategic Forces Command, and which is a part of India's Nuclear Command Authority, and it can hit as far as 4,000 kilometers. It can carry a payload of 1,000 kg, and it is a mobile two-stage solid fuel system. It is a surface-to-surface missile which has been designed and developed by the DRDO. So what is Strategic Forces Command? So it is sometimes called the Strategic Nuclear Command as well, which is part of India's Nuclear Command Authority, and it is responsible for command and control decisions regarding India's nuclear weapons program. So it is responsible for the management and administration of India's tactical and strategic nuclear weapons stockpile as well. So it was created in January 2003. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.